जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today, what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जानी है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा। This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. Get relieved from the Hindutva forces in India and to protect secularism. That is very important. That is for that purpose the meeting is conducted.
See, the meeting is particularly important because of the situation. Because India has, this has been an unprecedented situation for modern India, for post-independence India. We are having a complete assault on the democracy, and not just by the state, by private militia. So the BJP is out to destroy the country in every possible way. So this is why I think it is very important for opposition parties to come together in defense of the constitution, in defense of democracy, and to save the country and to resist this backward push. We are being pushed backward, and I think this is a good, we had a first meeting in Patna, this is the second meeting, and I think the message is going out, and probably from this meeting we can send out a stronger message to the people, inspire greater kind of popular mobilization and confidence, and the next election will have to be like a big mass movement to save India. जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है. इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड. This meeting is important because now the nation itself in a critical crossroads. So we have to protect the nation and defend the rights of the fellow citizens. So for that we all came together. So definitely in 2024 parliament elections, our alliance should rule the country and bring back the old era and the rights of the people back again. In those days, people of India said, Britishers divide and rule. But now people of India say, BJP is dividing and ruining the country. Therefore, to save country from ruination done by the BJP government, this committee has been convened. हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. शुरुआत और अंत, पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है. और आज जो देश की हालात है और उस परिप्रेक्ष्य में भी दो समूह, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष रहता है. और वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है, उसी को लेकर आज ये एक बैठक है, उस पर डिस्कशन है. This is a meeting for country's stability. The uniting, we have already named this as an united we stand. We should have a unity in this entire country. The country is facing a lot of hurdles, roadblocks, so the entire country has to be united. There is a different voice. The opposition has been suppressed. It is for the safety of the country, we all have to stand united. Today, under the leadership of Mallikarjun Kharge ji, Sonia ji and Rahul ji in Bangalore, in this garden city, we have arranged this, all the leaders of the oppositions have joined together. I have already said on record, joining together is the beginning. Today, thinking together will be the progress, and working together will be the success. We stand united, we will work united. We want 2024 to be free from the hatred politics of this country. You know that the BJP, the NDA is misusing all its
machinery, as a political tool. So we want to face them. They are using all possible steps to weaken the opposition parties or the regional parties at the national level and the state level. So we want a growth, we want the UPA type of government with a more secular image to be restored back for the safety of this country.